Hello everyone. Hello. Hi. Hello. Hi. Please tell me if you can hear me. We'll just begin the session. I know I'm early. I am 2 minutes earlier than the set timing. So we'll just wait for 2 minutes, let everyone join and then we'll start the class. As you can see on the screen, the topic for today is physical and chemical changes. It's a very interesting topic and it's beneficial for class 6, 7 and 8. Even the children who are in higher classes, if they want to revise this session, they can also attend this session. So let's just wait for 2 minutes and then we'll start the class. Just think about it. Just think about changes. Just think about things that happen all around you. Just think about them and try to imagine whether these changes are physical or chemical. Think. So have you ever heard about these changes, physical changes, chemical changes? You've done in school, done in class. Today we'll do it with a lot of fun and with a lot of examples and we'll learn it from the basics. So even if you haven't learned, if you haven't understood in school, you will now learn it in this session. And after this session, I can guarantee that you will be able to differentiate between physical and chemical changes very nicely. Okay, so what are we going to learn in today's session? In today's session, we are going to learn about physical changes, chemical changes, dissolving of sugar in water, rusting of iron, and some chemical changes as well. So we learn about physical changes, chemical changes, changes like dissolving of sugar in water, rusting of iron. You see these kind of changes around you? And also we learn about a chemical reaction. Yes. Okay, so let's first understand about Unacademy. Let me tell you something about Unacademy. I know you already know about Unacademy and that it is so popular amongst you all. Unacademy is India's largest learning platform. Yes, you heard it correct. So Unacademy is India's largest learning platform as of now and you get live sessions with the top educators of India. So now you can learn live at your home with the comfort of your own home and you will get the best of teachers giving you lessons directly at your computer or mobile screen. Also, you will get live practice questions with the educators. So you will now be able to even discuss question and answers and know about how to write the answers with the educators. Also, you will get weekly quizzes and live doubt solving sessions. So even in between the classes, you can ask your doubts. Also, you will get designated doubt solving sessions after the classes for designated chapters. So even that is available for you. So let me tell you something about myself. Do you know me already? I know there are some students who know me already. So I am Diksha Bhuwalka. My name is Diksha Bhuwalka and I am a teacher by passion. I am an active YouTuber and my channel is Diksha Bhuwalka e-learning. I am an offline and online teacher and I have been into online teaching since last 5 years. I have also been awarded by the Vice Chancellor of the St. Xavier's University for making
very good digital content for the professional students as well. I have mentored lakhs of students across YouTube, offline as well in my coaching centers. Also, I have made an app of my Diksha Bhuwalka e-learning, and students like you have watched my lectures on the app itself. So I'm into this online teaching and I love how students connect with me, how students are so interactive, they have so much of talent, they are so attentive in class, and they are so keen in learning new things. So I love to talk, as you can already see that I love talking, I love interacting with students, and I love to learn with students. So we are not going to study like we won't study physics, chemistry, we won't study it. We learn new things so that it keeps our interest in studies. So you can follow my profile Diksha Bhuwalka on Unacademy. My profile is Diksha Bhuwalka. As you can see, my name here. So you can follow my profile on Unacademy as well. My referral code is DB13. So now if you want to join any course on the Unacademy platform, you can simply put my referral code, which is DB13, and you will get a 10% flat discount on your course. So you can just apply my code DB13 as you can see on the screen. Okay, so the Unacademy app makes you learn anytime, anywhere. You can study from anywhere in the world. Only you need a smartphone or a laptop and you are set to go. Okay, so there's a good news for all of you. We are coming with a Eureka batch for the subjects Maths, Science and SST, and that would be for class 6, 7 and 8. It would be strictly based on NCERT syllabus. So it would be for CBSE, class 6, 7 and 8. So we are bringing out course the batch for Maths, Science and SST. So the start date would be October 5th. So from 5th of October it will start for class 6, and from the 6th of October it will start for class 7, and it would be ending on 31st of December. So in 3 months we are going to complete the syllabus so that you can excel in your final examinations. So now no need to worry, no need to go here and there, no need to find out private tutors outside. You can simply join Unacademy and learn from the top educators of India. So download the Unacademy Learning app now. It's available on the App Store as well as on the Google Play Store. And also I'll recommend do take the Plus subscription, which allows you to take the facility of so many features. It gives you the Plus subscription. Almost all the courses are available. Also, you can take live learning, live question answer sessions with the top educators. So if you're taking the Plus subscription, do not forget to put my referral code, which is DB13. This is my referral code, DB13. Do not forget to put it and claim 10% discount. So the features that you will be getting in the Plus subscription are you can learn live from the comfort of your home. You will get unlimited access to all the courses, not only the Plus courses or the Eureka batch, you will get unlimited access to all the courses. Also, you will be able to study from the top educators of India only at a single platform. You don't have to go anywhere else. You can simply learn from a single platform. Also, exhaustive coverage of syllabus will be there. We will be teaching you details of all the chapters. Also, we will be teaching you how to approach question answers and get full marks in your exams. Regular doubt solving sessions would be there. So, no need to worry as in how will the doubts get solved. You will be able to ask your doubts in between the sessions as well. Also, there would be proper designated doubt clearing sessions after each chapter so that you are not remain with any doubts. Also, there would be live test series. So, you will be able to participate in those live test series and check your progress. We will also provide you with the study material that will be in the PDF format. So, you can now download our study material, the material from which the teachers are teaching you, and you can study. There would be answer writing sessions so that you know how to approach the questions and write the answers in the perfect manner. Also, you can ask for good mentorship and guidance from any of the educators
in the Unacademy platform. So let me tell you about the pricing plan. Before we start, we'll quickly start off. Just let me tell you about the pricing plan. As you can see on the screen, 1 month course also you can take, which is 2,500 per month. 6 months course also you can take, which will bring down your cost to 1,667 per month. The best plan would be to take for 12 months, that is for 1 year, which would be bring down your cost to 1,250 per month. Also, if you want to go for a little longer course, you can take it for 24 months, 36 months, and also for 60 months. That will bring down your cost to a great extent. You can see for 24 months, your cost will come down to 1,042. For 36 months, your cost will come down to 1,000. So you can see the difference from 2,500 to 1,000. Also, if you take for 5 years, that is 60 months, you will get it only for 800 per month. So do not forget to put my referral code DB13 and get 10% discount on your Plus subscription courses. So let's start. Always we should read a quote. Every day we should read good quotes so that our days are filled with great positivity and we know about the people and how do people actually function. So here's presenting you with a great quote of the day. If you have good thoughts, it's one of my favorites. If you have good thoughts, they will shine out of your face like sunbeams and you will always look lovely. So now you want to know how to look lovely, right? You watch these makeup tutorials, you watch these on Instagram, YouTube and all. But if you actually want to look loveliest, you should always have good and positive thoughts in your mind. So if you have good thoughts, they will shine in your face like sunbeams and you will always look lovely because you will always have a smiling face. This lovely quote is said by Roald Dahl. He is one of my favorite authors. You can also read his books. It's great for kids like you. I would recommend to you to read his book called Matilda. It's great. You'll love it. Okay, so let's start. So let's start with the topic for today, physical and chemical changes. So there are a lot of changes in us. In us, I'm talking about ourselves. So first, we are born like a baby, like an infant, right? But slowly, so much of changes happen in our bodies as well. From the infant, we grow up to a kid, then an adolescent, then an adult, and finally, we start getting old. Like this old man, we start getting old finally. So there are so many changes in our body. There is so many changes in our body itself, right? So you can see a lot of changes around you. But is the change only in our body? No, there can be changes in matter, in things around us. So there can be changes in things around us. For example, let's take these examples. Like you can see a piece of paper. This piece of paper, even this can undergo a change. We are just taking random examples. This glass of water, even it can undergo a change. You can see this candle, even this candle can undergo a change. So not only us, not only our bodies, but even things around us, they can undergo a change. Now how does that happen? Let's see. Now a paper, what do you think a paper will undergo? What kind of a change will paper undergo? We can crumple a paper. So we can say simply that a paper can be crumpled. So this is the change that we can bring about in a paper. What change can we bring about in a glass of water? We can freeze it to make ice. Simple. So you can just keep this glass in your fridge and it will make ice for you. So what is the change that you can see? The water in the glass, it got frozen to make ice. Next, let's say an empty glass of water. So an empty glass of water, what kind of change can an empty glass of water make in itself? We can break the empty glass of water and what will happen? It will break into pieces, right? So these kind of changes happen all around us every time some or the other change is happening. Not only this, but simply switching off and switching on the light when you enter the room. Is it not a change? Earlier the room was dark when you entered, but when you switched on the light, the room got lit. So this is also a change.
So a lot of changes happen around us. So now, when we crumple a paper, what changes can you see? Can you tell me? What kind of changes do you see when you crumple a paper? Something changes about a paper? Yes? This doesn't remain like this simple paper. Something changes about it. Can you tell me what changes? When we crumple a paper, the physical appearance of the paper changes, right? The paper which was straight and perfect like in a notebook earlier, now it has become ugly. We can say it becomes ugly. Physical appearance of the paper changed. Now, let's talk about this car. Let's say I had a white car and now I painted it into blue. I did not change my car, I just painted the car. So what happened if I painted my white car into a blue car? Again, the physical appearance of the car changed, right? The physical appearance of the car changed? Yes. Similarly, let's say if I dice an onion, if I cut pieces, small pieces of onion, right? So first onion was looking like this, a proper raw onion, then I started dicing it. So again, the physical appearance of the onion changed. Onion was first big in size, but now it has turned to small pieces of onion. Only the size of the onion has changed. Does the taste of the onion change? Can you tell me that? If you just dice the onion and taste it again, does the onion's taste change? No. The taste of onion does not change at all. Only the physical appearance of onion changes, right? Similarly, if we freeze water, like the glass of water we kept in the refrigerator, if we freeze the water, only the physical appearance of water changes. Water actually changed from liquid to solid. So we can say that the state of water changed from liquid to solid. But if I taste it, if you taste the water or you taste the ice, does the taste change? Yes, the water is not that cold, ice is cold, but it does the same work for you. So nothing else changed, only the state. The liquid state changed to the solid state. Now if you want to get back the water from the ice, you can also do that. You can simply melt the ice. Okay, similarly like this. So when we talked about a lot many changes, similarly like this, a lot many changes happen around you. Like you can see on the screen, these two girls, simple two girls, they are just folding the clothes. Maybe their mother has scolded them for not doing any any household work. So now they are sitting with their clothes and folding it. So these kind of changes also you see around you. Also if you want, you can stretch a rubber band. Isn't it not a change? First the rubber band was like this. When you stretched it, the shape changed. Now again if you leave it, it comes back to its normal shape. So such kind of small changes happen all around you. So you can also say इतनी बड़ी शहरों में ऐसी छोटी बातें होती रहती है. तो हमारे आसपास ऐसे छोटे changes होते रहते हैं. Now, अभी तक हमने जिन changes के बारे में पढ़ा, all those changes will be termed as physical change. Yes, अभी तक हमने जिन भी changes के बारे में पढ़ा, they will be termed as physical changes. तो physical changes किसको कहते हैं? Properties such as shape, size, color and state of a substance are called its physical properties. Normally if you look at each other, your sibling, your friends, so you know that your friend's hair is black, your friend's hair is long, your friend is fair or your friend is dark, your friend has big eyes, right? So you'd say that your friend is physically beautiful, right? So we talk about the physical appearance of your friend, of any person that you look at. Simply those shape, size, color and state of things. Properties like shape, size, color and state are called its physical properties. So if any change in a substance that brings change in its shape, size, color or state,
then that change will be called as a physical change. Understood? That change will be called as a physical change. So what do we term as a physical change? A change in which a substance undergoes a change in its physical properties. For example, let us talk about the shape. We crumpled the paper. Yes, we crumpled the paper. So the shape of the paper, it changed. Let me just show you. So we crumpled this paper. So the shape of the paper changed from a square or a rectangle to a dirty sphere, right? Now what about the car? The car's color got changed. So again, here the physical property color of the car got changed. Did we change the car as a whole? No. We only changed the color of the car. Now as you can see, when we diced the onions, what did the change? What change did it bring? When we diced the onions? The size. Yes, very good. The size of the onion changed from the big onion to small pieces. Next, when we changed the water to ice, what did we change about it? We changed its state. So now you know that properties such as shape, size, color and state are physical properties. So any change that comes in these physical properties will be known as physical change. As simple as that. So can you give me examples of physical change? Think about examples of physical change. Think and tell me. Stretching of a rubber band is a physical change. Yes. Folding of clothes is a physical change. Yes. Switching off the light, switching on the fan, physical change. Yes. So now you know what are physical changes. उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. Physical change simply आपके shape में, size में, color में या state में change लाता है. That means changing of ice from water or changing of water to ice is also a physical change. खाली water अपना state बदल रहा है, liquid से solid हो रहा है. Otherwise water ही रह गया. Because you know कि water का 3 states है, liquid, gas या solid. तो water vapor भी water है, ice भी water ही है. Simply उसका state change होता है. तो अगर ऐसा कोई भी change हो, that will be a physical change. So in the same way, can you tell me water vapor, changing of water into water vapor, is it a physical change or not? Think and tell me. Yes, changing of water to water vapor is also a physical change क्योंकि खाली state change हो रहा है, right? Very good. चलो, tell me this. Is sharpening a pencil a physical change? क्या pencil को sharp करना एक physical change है? Think and tell me. Yes, it is a physical change because pencil तो pencil ही रह गया, खाली उसका size change हो गया. इसको sharp करेंगे तो उसका size change हो गया, right? Next, now let us analyze something. जब मैंने कार को पेंट किया, when I painted the car from white to blue, did any new product get formed? क्या मैंने कोई नया गाड़ी खरीदा था उस समय? क्या गाड़ी अपने आप नई बन गई? नहीं. हाँ, नया लुक आ गया उसमें, बट क्या गाड़ी नई बन गई? नहीं, गाड़ी तो वही थी, खाली कलर चेंज किया मैंने. हाँ, लुक नया जैसा हो गया, बट क्या वो एक नई गाड़ी आ गई? नहीं, गाड़ी वही थी, खाली मैंने उसका कलर चेंज किया. सिंपली सिमिलरली जब मैंने अनियंस को डाइस किया, जब मैंने अनियंस को काटा छोटे छोटे पीसेस में, तो क्या कोई नया प्रोडक्ट बन गया? क्या प्याज की सब्जी बन गई खाली काटने से? नहीं. तो वी कैन से कि नो न्यू प्रोडक्ट वाज फॉर्म्ड, ओनली द साइज of the onion got reduced to small sizes. But did any new product get formed? क्या onion कुछ नया बन गया? No. Again, अब मैंने water को freeze किया, तो कुछ नया product नहीं बना है, खाली water liquid से solid चला गया, तो no new product was formed. So, जब ऐसा कोई changes हो जिसमें कोई new products form नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं physical change, right? So, ice can be melted. Ice can be melted to form water. ये हमें पता है
कि एक बार वाटर से आइस बना ले तो आइस को वापस वाटर भी बनाया जाता है। आप आराम से उसको थोड़ा देर के लिए बाहर छोड़ दो, मेल्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ आइस कैन बी रिवर्स्ड इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। पहले क्या हुआ था, पहले वाटर से आइस बना था, अभी आइस से वापस वाटर बन गया। कैसे? विद द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, राइट? सो दिस चेंज दैट यू सॉ, इट इज अ रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज मतलब जिससे आप चेंज को वापस उल्टा कर सकते हो, जिससे आप जो चेंज हुआ उसको वापस ठीक कर सकते हो। तो हमने क्या किया था, वाटर से आइस बनाया था, अब हम आइस को वापस से वाटर बना सकते हैं, तो दैट विल बी टर्म्ड एज अ रिवर्सिबल चेंज। समझ आया रिवर्सिबल चेंज? ग्रेट। So now a change in which a substance undergoes physical change in its physical properties is called a physical change। ये हमें already पता है कि अगर कोई भी change में खाली उसका physical properties, can you tell me the 4 physical properties? Hello, hi, Newton science, hello, I'm good. So can you tell me what are the 4 physical properties? Shape, size, color and state. These are the 4 physical properties. तो इन चारों में अगर कुछ भी चेंज आएगा तो we will term it as physical change. तो physical changes के कुछ कुछ features है जिससे हम पहचान पाएंगे कि ये physical change है. Let's see what. So the first one is a physical change is generally reversible. Generally आप उसको reverse कर सकते हो, ठीक है? अब जैसे कि पानी को आइस से वापस पानी बनाया जा सकता है। पहले अगर हमने कार को व्हाइट से ब्लू किया तो वापस ब्लू से व्हाइट कर सकते हैं, तो जनरली रिवर्सिबल है। हाँ, जनरली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्याज को मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, तो वापस तो मैं छोटे टुकड़ों को बड़ा टुकड़ा नहीं कर सकती, इसीलिए वी विल से दिस एज जनरली रिवर्सिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कभी भी इसमें कोई नया चीज नहीं बनेगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो वही रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 चीजें 3 चीजें मिला के कोई नया प्रोडक्ट बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस डू नॉट चेंज। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर का प्रॉपर्टी को चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी लेट्स से वी क्रम्पल द पेपर। हमने पेपर के बारे में पढ़ा कि हम लोग उसको ऐसे क्रम्पल कर सकते हैं, तो क्या पेपर कुछ और बन गया? हम लोग वापस से अगर उसको खोल के उसके ऊपर लिखेंगे तो लिखा जाएगा, इसका मतलब पेपर कुछ और नहीं बना। पेपर स्टिल रिमेन्स पेपर ऑन विच वी कैन राइट, करेक्ट? सो वी कैन से दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, उसके अंदर का प्रॉपर्टी कुछ चेंज नहीं हुआ, वो अभी भी पेपर ही है। इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आर रिटेन्ड। ऑब्वियसली जब अंदर का कुछ चेंज नहीं हुआ तो वह वैसा ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डाइस द अनियन इनटू स्मॉल पीसेस, तो डिड इट चेंज? Did the taste change? No. अनियन आज भी जैसा टेस्ट करेगा बड़ा में, छोटे में भी वो वैसा ही टेस्ट करेगा। तो आप उसको कच्चा अगर वैसे भी खाते हो या उसको स्मॉल डाइस करके खाते हो तो सेम टेस्ट आएगी। तो वी कैन से दैट इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आर रिटेन्ड। रिटेन्ड मतलब रह जाता है, उसका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला कि हम लाइट को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो अगर हमने लाइट को स्विच ऑन किया तो क्या स्विच बदल गया? नहीं, वापस उसको ऑफ करेंगे वो वैसा ही हो जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट, अब अगर सपोज अभी तक हमने क्रम्पलिंग ऑफ पेपर की बात की, अभी तक हमने बात किया कि अगर हम लोग पेपर को क्रम्पल करते हैं, बट इफ व्हाट अगर हम पेपर को जला दें, हम अगर पेपर को क्रम्पल के जगह कुछ और चेंज लाते, चलो पेपर में तो चेंज ही लाने की बात हो रही है, तो लेट्स से वी चेंज द पेपर इन द वे दैट वी बर्न द पेपर, तब क्या होगा? अगर हम पेपर को बर्न करेंगे तो क्या होगा? थिंक। पेपर को अभी तक हम क्रम्पल कर रहे थे, बट अब हम पेपर को जलाएंगे तो क्या होगा? इट विल टर्न इनटू एशेस, है ना? पेपर क्रम्पल करने से तो वापस पेपर को आयरन करके ठीक कर लोगे, बट अगर मैंने पेपर को जला दिया, what will happen? Can you get the paper back? Tell me, can you get the paper back? No. क्या आप पेपर पे वापस से लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। क्या वो पेपर अब दोबारा मिलेगा?
कभी नहीं मिलेगा. So we can say that when we burn the paper, so individual properties are not retained. अब paper नहीं रहा, we cannot write on the paper, we cannot stick that paper in our notebook again. So individual property जो paper का पहचान है वो चला गया, paper का color भी change हो गया, सब कुछ change हो गया. Next, paper क्या बन जाएगा? Can you tell me paper क्या बन जाएगा? Paper बन जाएगा ashes. Yes, so we can say that paper बन जाएगा ashes. Paper will become ashes. Okay. Next. Individual properties are not retained when we make प्याज का सब्जी. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ने इसके पहले प्याज को जिस डाइस किया था, छोटे छोटे टुकड़े किया था, राइट. बट अब इन छोटे टुकड़ों को हम अब उसकी सब्जी बना देते हैं. अब इन छोटे टुकड़ों की हमने क्या की, इसकी सब्जी बना दी. तो क्या अब सब्जी और प्याज का टेस्ट सेम रहेगा? टेल मी. यस, प्याज आपको समझ में आएगा कि ये प्याज का सब्जी है, बट क्या कच्चा प्याज, रॉ प्याज का टेस्ट एंड सब्जी का टेस्ट सेम लगेगा? नहीं. अगर सेम ही लगता तो सब्जी नहीं बनाते. सो इन दिस केस ऑल्सो वी कैन से दैट इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आर नॉट रिटेन्ड. प्याज, रॉ प्याज का टेस्ट एंड प्याज की सब्जी का टेस्ट आर नॉट द सेम. न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस. ये एक नया सब्जी बना कि नहीं? दिस इज अ न्यू सब्सटेंस. दिस इज नॉट द सेम रॉ ऑनियन, इट इज अ न्यू सब्सटेंस नाउ. अच्छा, ये केमिकल रिएक्शन कहाँ से आया? हमने गैस पे इसको पकाया है. हम जब प्याज काट रहे थे, वी डिड नॉट यूज द गैस, बट व्हेन वी एक्चुअली कुक द ऑनियन, वी मेड द सब्जी आउट ऑफ इट, वी एक्चुअली यूज द गैस स्टोव, वी यूज अ लॉट ऑफ स्पाइसेस. तो हमने बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक नया चीज़ बनाया, राइट. So we can say that this is a new substance that is formed due to chemical reactions. Perfect. So ये सारे changes जो अभी तक आपने देखे, ये सारे changes थे chemical changes. Which changes? Paper turning into ash when we burn it. Onions, cooking of onions, ये हो गया chemical change. So इन changes को बोलेंगे हम लोग chemical changes. So a change in which a substance undergoes a change in its chemical properties is called a chemical change. Understood? इसमें क्या होता है, उसके chemical properties change हो जाते हैं, उसके अंदर का जो उसका सब कुछ अंदर का है वो सब change हो गया. पेपर नहीं रहा, raw onion नहीं रहा, right? Hello Ved Prakash Yadav, hello, hi, good evening. So paper नहीं रहा, onion नहीं रहा, दोस्त ना रहा, right? So a change in which a substance undergoes a change in its chemical properties is called a chemical change. ठीक है? Now, so this change, chemical change is a permanent change. Chemical change is a permanent change. What about physical change? क्या physical change एक permanent change है? नहीं. Physical change तो temporary change है because it is reversible. Remember physical change के बारे में हमने पढ़ा था कि it is reversible. Switching on the light, switching off the light, reversible change है. But chemical change permanent change है. आप इसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते. जैसे कि प्याज की सब्जी के बाद आप उसको रॉ प्याज नहीं बना सकते. कोई टेक्नोलॉजी अभी ऐसी नहीं आई है जो आपको उसको ओरिजिनल करने देगी. ऑल्सो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, राइट. अभी तक हमने क्या पढ़ा कि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, बट केमिकल चेंज में यस, नई प्याज की सब्जी बनी, एशेस बनी पेपर से, सो देयर कैन बी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. ऑब्वियसली अगर नया सब्सटेंस बन गया है, okay, hi Harshita, okay, Harshita Yadav from the class, I remember you were there in the special class, right?
So individual properties are not retained. Obviously, अगर नया प्रोडक्ट बन गया है तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल प्रॉपर्टी तो नहीं रहने वाला है, क्योंकि नया बन गया वो, तो उसका जो पहले का टेस्ट, पहले का सब कुछ था, वो सब कुछ चेंज हो गया. तो भैया तुम तो चेंज हो गए, आप दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, सब कुछ बदल गया. केमिकल चेंज सब कुछ बदल देता है और आपको वापस वो दोस्त नहीं मिलता है. चलो, कैन यू टेल मी कुकिंग ऑफ एन एग? Yes, I remember, Harshita, you were there in the class, I think. Yes, I remember. Okay, so can you tell me what change is cooking of an egg? Is it a physical change or is it a chemical change? Can you tell me, is it a physical change or a chemical change? Cooking of an egg? Okay, so you are Vishal. Very good. I remember Vishal. You were there in my first live class also. Okay, so let me see, what do you answer? Cooking of an egg. Cooking of an egg is what change? So पहले ये जानने के पहले देखते क्या एक्चुअली चेंज हुआ. फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आर नॉट रिटेन्ड. जब हम लोगों ने एग को बनाया, जब हमने अंडा को बना लिया, उसका ऑमलेट बना लिया, या उसका कुछ भी जो भी डिशेज होता है बनाया, तो क्या रॉ अंडा और बना हुआ अंडा का टेस्ट चेंज नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया. क्या एक नया चीज नहीं बन गया? क्या वो अंडा रह गया? नहीं, वो एक नया ऑमलेट बन गया. राइट. सो वी कैन से दैट न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. यस, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. एंड कैन यू रिवर्स इट? क्या आप बने हुए अंडे को वापस रॉ अंडे में बना सकते हो? नहीं बना सकते हो. तो दिस चेंज इज अ केमिकल चेंज. ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर कुकिंग इन्वॉल्व है, अगर हम लोग कोई भी चीज को कुक कर रहे हैं, इफ यू आर कुकिंग, देन इट हैज टू बी अ केमिकल चेंज. कुकिंग कोई भी चीज को परमानेंट कर देता है, तो कुकिंग विल बी अ फिजिकल चेंज, नहीं केमिकल चेंज. नेक्स्ट, formation of cheese or yogurt from milk. Formation of cheese or yogurt from milk. Yes Vishal, yes, कल है. कल 6 की लाइव क्लास शायद या तो कल है या मंडे को है. आप नोटिफिकेशन के लिए फॉलो करके रखो मेरा प्रोफाइल. You can follow my profile on Unacademy so that whenever we have these free live classes, special classes, plus classes on Unacademy, you will get notified and you can join my class. मंडे को विशाल, मंडे को एक लाइव क्लास यूट्यूब पर है क्लास 6 के लिए. एक लाइव क्लास है यूट्यूब पर क्लास 6 के लिए on Monday. Okay, now what about formation of cheese or yogurt from milk? You know that milk products are cheese, yogurt, right? Hi Ram Jaiswal, hello. So do you know me already, Ram? Okay. Hello, hi. So you already know that we make a lot of milk products from milk, like cheese, yogurt, right? Paneer. So there are a lot of milk products. So जब भी हम लोग cheese या yogurt बनाएंगे milk से, what do you think? What happens? बैक्टीरिया से बनता है, पहला बात तो ये. So क्या ये physical change है या ये chemical change है? This is a chemical change. Why? Think. क्या मिल्क का टेस्ट और कर्ड का टेस्ट सेम होता है? मिल्क का टेस्ट और चीज का टेस्ट सेम होता है? नहीं होता है. हाय राम, आई एम फाइन, थैंक यू.
You can follow my profile on Unacademy as well. Okay. So formation of cheese and yogurt from milk is a chemical change because सबसे पहले मिल्क का टेस्ट कर्ड का टेस्ट सेम नहीं है. मिल्क से एक नया सब्सटेंस बना, मिल्क नहीं रह गया, मिल्क से एक नया सब्सटेंस बना कर्ड, मिल्क से एक नया सब्सटेंस बना चीज, राइट. योगर्ट इज कर्ड. तो ये नया सब्सटेंस जो बना है इससे समझ में आता है कि इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इट इज अ केमिकल चेंज. दूसरा, केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. तो कैन यू रिवर्स दिस? क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हो? कैन यू रिवर्स योगर्ट या चीज को टूवर्ड्स द मिल्क अगेन? नो, राइट. तो दैट इज व्हाई दिस इज अ केमिकल चेंज. राम जयसवाल, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट, लेट्स ऑब्जर्व समथिंग. क्या हम एशेस से पेपर वापस बैक मिल सकता है हम लोगों को? एक बार सपोज हमने पेपर को जला दिया, क्या हमें ये पेपर दोबारा मिलेगा? जी नहीं मिलेगा. We cannot turn back the process. So chemical changes are irreversible, which cannot be reversed. अगर आपने कर दिया तो भाई कर दिया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता. Physical change reversible है. आपने अगर पानी का आइस बना दिया तो अब आइस से वापस पानी बना सकते हो, लेकिन अगर आपने अपना स्कूल का पेपर जला दिया है तो अब वो दोबारा नहीं बनेगा. ठीक है. सिमिलरली आप दही और चीज से वापस मिल्क नहीं बना सकते, राइट. यू कैन नॉट मेक मिल्क बैक फ्रॉम योगर्ट और कर्ड, सो इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो चलो केमिकल चेंजेस में एक और चीज ऐड करते हैं. A change in which a substance undergoes a change in its chemical properties is called a chemical change. Right? A change in which chemical properties में change हो जाता है, chemical property में change हो जाता है, उसको बोलते हैं chemical change. Right? Physical change होता है temporary change और chemical change होता है permanent change. ठीक है. तो ऑलवेज रिमेंबर कि फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज एंड केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज. ऑल्सो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, जैसे कि प्याज की सब्जी, जैसे कि एशेज. इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आर नॉट रिटेन्ड और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाता है. मतलब उसका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, वो चेंज हो जाता है. केमिकल फॉर्मूला कैसे चेंज होता है उसके बारे में हमारे पास एक एग्जांपल है, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए. ये हमें समझना था कि फिजिकल और केमिकल में क्या क्या डिफरेंस है, फिजिकल और केमिकल में क्या क्या डिफरेंस है, राइट. यस राम, आई नो, आई थिंक सबको पता नहीं चला कि आज क्लास है, तो ये आपके यूट्यूब पर रहेगा ये क्लास. आप लोग आराम से इसको फॉरवर्ड करके अपने फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हो. Next, let's talk about rusting of iron. What change do you think is rusting of iron? What change do you think is rusting of iron? Rusting of iron is a chemical change. Yes, rusting of iron is a chemical change. Correct. Because you can see this. You can see किस तरीके का rust होता है. Iron nails, ये जितने भी टाइप के आयरन के प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें जंग लग जाता है, इसको बोलते हैं जंग लगना, रस्ट. अगर बहुत टाइम तक आयरन के प्रोडक्ट्स मॉइस्चर में पड़े रहेंगे बाहर तो इसमें रस्ट लग जाते हैं. ठीक है. ओके. इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम्स, इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम, इट विल डेवलप, इट एक्वायर्स अ फिल्म. It acquires a film of brownish substance. Film मतलब उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है, राइट. आयरन के ऊपर एक लेयर आ जाता है, एक लेयर आ जाता है कैसे कलर का? ब्राउन कलर का. ठीक है. The substance is called rust. इसको बोलते हैं रस्ट और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग. इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? रस्टिंग. तो ये हो गया रस्ट.
ये जो brownish substance that you are seeing, this will be termed as rust. And this whole process जिससे rust लगता है उसको बोलेंगे rusting. तो rusting कहाँ पर होती है? ओके राम, मुझे लगा मैं भी फेवरेट हूँ. मेरी क्लास भी आप देखना अनअकैडमी पे. आई नो, आई थिंक यू विल लाइक इट अ लॉट. You did not like my class, Ram? Okay. Rusting of iron के बारे में बात करते हैं. Rusting of iron कहाँ होता है? Iron gates of parks और farmlands. कहीं पर आप देखते हो बाहर में इतने सारे आयरन के गेट होते हैं, लोहा का गेट जिसको बोलते हैं, वो सब तो ऐसे ही पड़ा रहता है, बहुत अच्छे से साफ सफाई भी नहीं होती है. आयरन बेंचेस जो होते हैं लॉन में, जो लोहे के बेंचेस होते हैं, गार्डन्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट आयरन के सारे आर्टिकल्स अगर आप उसको ओपन में रख दोगे, इफ यू कीप इट इन द ओपन, इट विल गेट रस्टेड बिकॉज मॉइस्चर आ जाते हैं, मॉइस्चर से आता है रस्ट. ओके, थैंक यू राम. kept in the open gets rusted. तो काफ़ी सारे आयरन के प्रोडक्ट्स रस्ट हो जाते हैं. ठीक है. इवन आप अपने किचन में भी देख सकते हो. यू कैन सी इट इन योर किचन ऑल्सो. इन द किचन a wet iron pan or the tawa. Have you seen the tawa, the iron pan on which your mother makes rotis, chapatis? तो इतना अच्छा साफ सुथरा आयरन पैन जब हम लोग नया लाते हैं तो ऐसा दिखता है. बट धीरे धीरे ये रस्ट लग जाते हैं, इस पे रस्ट लग जाते हैं. यू कैन सी दिस रस्ट. So in a kitchen, a wet iron pan often gets rusted if it is left in that state for some time. अगर आप उसको ठीक से नहीं रखोगे तो फिर उस पे भी रस्ट लग जाएगा. Fine. So that is how rusting takes place. Even if you might be seeing a lot of utensils which are not used over a long period of time, even they catch rust. Okay, Ram, thank you so much. Thank you. Love to Uttar Pradesh. ओके, रस्ट इज नॉट आयरन. सबसे पहली बात ये याद रखने की है कि रस्ट इज नॉट आयरन. रस्ट इज नॉट आयरन. आवाज आ रही है आप लोगों को? आई होप देयर इज नो नेटवर्क इश्यूज. ओके, फाइन, थैंक यू. सो रस्ट इज नॉट आयरन. कभी भी ये गड़बड़ मत करना कि एग्जाम में लिख दो कि रस्ट आयरन है. आयरन के ऊपर जो ब्राउनिश सब्सटेंस होता है वो होता है रस्ट. बट रस्ट और आयरन इज नॉट द सेम थिंग. It is different from the iron on which it gets deposited. Do you think that it is a physical change? No, it is not a physical change. It is a chemical change because a new substance is formed. Right. Okay. Let's do an activity जिससे आप chemical reactions को समझ पाओगे. Let's do an activity जिससे आप chemical reaction समझ पाओगे. Let us get a small piece of thin strip or ribbon of magnesium. So ये आपको generally अभी घर में तो नहीं मिलेगा, but once the schools reopen, you can visit your chemistry labs and with the help of your chemistry teacher or the lab assistant, you can do this experiment. So you can take a thin strip or ribbon of magnesium. उसके टिप को अच्छे से clean कर लो with sandpaper. Bring the tip near a candle flame. Bring the tip near a candle flame as you can see in the image. Look at the image. हमने क्या किया, थोड़ा सा कैंडल पे फ्लेम जला के मैग्नीशियम के टिप के पास लाया. इट विल बर्न विथ अ ब्रिलियंट वाइट लाइट. एज यू कैन सी इन द इमेज, कितना सुंदर वाइट कलर का लाइट एकदम थ्रो कर रहा है. राइट. व्हेन इट इज कंप्लीटली बर्न्ड, अगर आप पूरा जला दोगे उसको तो पीछे से क्या बचेगा? एशेस बचता है. क्या बचता है? एशेस.
सिंपली जैसे पेपर को जलाते हैं तो एशेस बचता है, वैसे इसमें भी एशेस बचता है. Ha, thank you, Ram. That's quite a compliment. I haven't received ऐसा compliment. So you're calling me titanium. Okay. But it leaves behind a powdery ash. तो ये हमें पता है कि जब पेपर ऐश बन जाता है, वैसे ही आप मैग्नीशियम को भी अगर जलाओगे तो वो ऐश बन जाएगा. Does the ash look like the magnesium ribbon? What do you think? रिबन जैसा दिखता है और ऐश जैसा दिखता है, क्या वो सेम होगा? No, it will not be the same. It will not be the same. Magnesium is a silvery white metal that burns in air and utilizes atmospheric oxygen from air to form magnesium oxide. अगर आप मैग्नीशियम को जलाते हो तो क्या होता है? मैग्नीशियम इज अ सिल्वर कलर का व्हाइट मेटल, ठीक है. तो मैग्नीशियम होता है एक सिल्वर कलर का व्हाइट मेटल, जिसको अगर आप जलाते हो तो वो एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ऑक्सीजन लेगा, वो जलने के लिए ऑक्सीजन लेगा टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो क्या हुआ यहाँ पर? यू कैन सी न्यू सब्सटेंस गॉट फॉर्म्ड. यस, हमने थोड़ा सा चेंज लगाया मैग्नीशियम में, हमने उसको थोड़ा सा जलाया, हमने चेंज बनाया, तो वो एक नए सब्सटेंस में फॉर्म हो गया. व्हाट इज दैट न्यू सब्सटेंस? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये है वो नया सब्सटेंस. तो इसको हम लोग एक केमिकल इक्वेशन में बात करते हैं. मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg, ऑक्सीजन का सिंबल इज O या O2. एंड व्हेन यू मिक्स मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, जब आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को मिलाते हो तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. तो कैन यू सी दैट अ न्यू सब्सटेंस गॉट फॉर्म्ड? है ना, बना ना, न्यू सब्सटेंस बना, न्यू सब्सटेंस गॉट फॉर्म्ड. न्यू सब्सटेंस गॉट फॉर्म्ड एंड वी नो दैट केमिकल चेंज का मतलब ही है कि नया सब्सटेंस बन जाना, नया सब्सटेंस बन जाना. न्यू सब्सटेंस बन जाता है तब उसको बोलते हैं केमिकल चेंज, राइट. ओके, नाउ सपोज आप मैग्नीशियम ऑक्साइड पे लिटमस टेस्ट करो. लिटमस टेस्ट क्या होता है? रेड लिटमस पेपर अगर आप लेते हो या ब्लू लिटमस पेपर अगर आप लेते हो, और अगर आप कोई भी चीज़ में उसको टेस्ट करते हो, उसको टच करते हो, और अगर वो अपना कलर चेंज करता है, तो उससे समझ में आता है कि या तो वो एसिडिक है या वो बेसिक है. तो आप क्या कर सकते हो? एक रेड लिटमस पेपर ले सकते हो और एक ब्लू लिटमस पेपर ले सकते हो. अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाए, दैट मीन्स ये वाला जो भी प्रोडक्ट आप टेस्ट कर रहे हो दैट इज बेसिक इन नेचर, इट इज बेसिस. You have already studied in the chapter acids and bases. Yes, so there are few things which are acidic in nature and there are few things which are basic in nature. तो अगर red litmus paper blue हो जाए तो that means this magnesium oxide is basic in nature. तो जब हमने इस पे red litmus paper का टेस्ट किया तो वो blue हो गया. This reaction shows that magnesium oxide is basic in nature. What happened, Ram? I did not understand what you are asking. क्या पूछ रहे हो, राम? Okay. So we can say that the formation of magnesium oxide is a direct combination reaction of two elements. Obviously, हमने दो elements को मिलाया, किसको? मैग्नीशियम मिलाया, और हमने ऑक्सीजन नहीं मिलाया, मैग्नीशियम ने अपने आप ही ले लिया. तो दो चीजें मिलकर बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला के बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, which is entirely different. It is entirely different. Yes, I know, Ram. That is, उसको इग्नोर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे. Just ignore and listen to what I am saying.
Yes, I know. वो कभी कभी ग्रीन स्क्रीन में कैमरा की वजह से होता है, बट दैट डजंट मैटर मच, वो बाद में ठीक कर दिया जाएगा. So magnesium oxide is entirely different from the reactants magnesium and oxygen. इसका मतलब मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत ही अलग है. So पूरा उनका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी चेंज हो गया. We already learned ना कि केमिकल चेंज में इंडिविजुअल प्रॉपर्टी चेंजेस. सो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी चेंज हो गया. किस में? मैग्नीशियम ऑक्साइड में. मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपना अनोखा, उसका अपना खुद का रहता है chemical properties and physical properties. So we can say that magnesium oxide is completely different from the reactants magnesium and oxygen. That is why this reaction is a chemical change. So if I ask you, why is this reaction a chemical change? Why is formation of magnesium oxide from the metal magnesium a chemical change? What will you tell me? What will you tell me? Yes, you will tell me that the formation of magnesium oxide is a direct combination reaction of two elements, magnesium and oxygen, and magnesium oxide is entirely different from the reactants magnesium and oxygen. That is why this reaction will be termed as chemical change. It is non-reversible. Understood, everyone? Understood? Yes, thank you. Okay, so we have a pop quiz for you. Can you tell me that explosion of firework is a physical change or a chemical change? पटाखे, दिवाली पे जो पटाखे फोड़ते हैं वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? Let's see if any of you get it correct. Yes, very good. Yes, it is a chemical change. Yes, it is a chemical change. Explosion of firework is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. Right? इस चेंज में क्या होता है? हीट निकलता है, लाइट निकलता है, साउंड निकलता है, राइट, एंड बहुत सारा अनप्लेजेंट गैसेस भी निकलता है, बहुत सारा धुआं आता है इससे. That is why we are advised not to play with fireworks because it is very much pollutant. It pollutes the environment a lot. Yes. So now we've come to the end of this session. We have come to the end of the session. We come to the end of the session. Let's just do the summary. A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. For example, change in shape, change in size, change in color and change in state. These changes will be called as a physical change. Can you tell me some properties of physical change? Some features of characteristics of physical change? Individual properties are retained and no new substance is formed. No new substance is formed when we talk about physical changes. Now, if you come to chemical change, a change in which substance undergoes a change in its chemical properties. जैसे उसका अंदर का chemical formula ही change हो जाए, उसको बोलेंगे chemical change. What are the features? Individual properties are not retained, new substances are formed, and chemical change is irreversible. Cannot reverse it. Physical change is generally irreversible. कितना बार हम लोग उसको reverse कर सकते हैं? So this is the end of the class. I hope you loved the class. I enjoyed a lot with you guys, and thank you so much for giving your time. I would recommend something. Do not leave the class right now. Give me 2 minutes. I should recommend the Unacademy Plus subscription to all of you. It's a great subscription thing, and you will get a lot of facilities. If you take the Unacademy Plus subscription, you get a lot of features. You get live interaction with faculties like top educators of India at one place, and you will be able to get doubt clearing sessions. Here I know on YouTube, if you have doubts, you cannot ask itna directly, and you won't get enough, you will not get enough facilities also over here. But if you are on the Unacademy platform, you will have direct live doubt clearing sessions,
and you will be able to speak with me exactly when I am in class. You will be able to ask your doubts. Fine. And also you will be able to give a lot of mock test series, a lot of live question answer sessions, a lot of things you will be able to give. So please join the Plus subscription and also ask your friends to do it. It's quite affordable and you will get a lot of features. And you won't have to go for different subjects to different teachers. Everything you will have at single platform, under a single platform, under the guidance of top educators. Also, you will be able to study with me on the Unacademy platform. Please do put my referral code DB13. My referral code is DB13. My name is Diksha Bhuwalka. You can also follow my profile on Unacademy. Also, there are a lot of special free live classes on the Unacademy app for you all. So do join the app, do use my referral code, and also you can attend the free live classes on the app. My referral code is DB13. Do not forget that. Also download the Unacademy app now from the App Store or the Google Play Store. So thank you so much. I had a lovely session. Thank you, Ram. Thank you. Let's meet. Ram, you can Google my name, Diksha Bhuwalka, and you will get all the ways to contact me. So you can just Google my name, Diksha Bhuwalka. On Google, you can just write my name, Diksha Bhuwalka, and you will get to know everything about me. You will get all things where you can contact me. Okay, so thank you so much. Unacademy, keep studying, keep showing so much of love on Unacademy. Let's crack it. Thank you so much, guys. Thank you.